Hello, 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 hello. Okay, we'll wait 3 4 minutes and next 5 minutes that people can join, and then we'll start the live stream. Okay, we'll start solving the lead code 75. Okay, we just get things started. Okay, this is all right. We share the screen. Okay, great. Try to open up a problem. Okay, this opens up. If I do control plus, great, nice. Okay, okay, yeah. Let's just see all the problems. These are arrays and strings, two pointer, sliding window, prefix sum, hash map set, stack, queue, linked list, binary tree DFS, binary tree DFS, BST, graph DFS, graph DFS, heap priority queue, binary search, backtracking, DP1D, DP2D, bit manipulation, try, intervals and monotonic stack. Okay, great. Mm-hmm. Let's check once. Mm, okay, it's live. Mm-hmm. Okay. We'll start at 8:55. Let's give 5 minutes. Okay. And then. Mm-hmm. Mm. Okay. It's 8:50. Okay. At least we'll start problem solving at 8:55. But till then, let's go through what actually LeetCode 75 is. So LeetCode 75 is basically a small, concise list of problems which has been prepared by LeetCode people itself, which is basically top 75 trending problems that are being asked in the market. I'm not sure that this list is pretty updated or not, because as of now, what I'm seeing in the market is that you know nowadays graphs and EP is asked a lot more in comparison to other topics, but still other topics are important as well, because in a lot of cases other topics basically form the baseline to solve the bigger problem. Okay, so basically you can say that a bigger problem is basically a culmination of multiple topics accumulate together. So that's why it's also necessary to go through these problems. So specifically, what I think from my side is basically, first of all, as what lead code says, is basically it's essential problems, trending problems. So trending, I'm not
I do not agree completely with. Must do problem list. Okay, for a beginner, I'll say for sure that these problems would be very good enough to build you a good enough base so that you can start giving assessments and interviews. So I think these 75 problems should be enough to at least give you a good base to start with. Okay. And for yeah, for 3 months, I think yeah, that this is enough if you only have 1 or 3 months. But nevertheless, this depends upon what kind of preparation is going on. If you are a fresher, basically, let's say if you are in college, or let's say if you are in or in your final years and you're preparing for companies that are going to come for placement, then I think these 75 problems you might need more than that. Okay, because these won't be, because I think so binary search is not covered in this set. Okay, binary tree is there, but binary search is not there. Okay, binary search is there. Okay, great, binary search is there. Okay, then no issues. I think they have covered all the topics. So yeah, uh, basically I think solving these problems should give you enough baseline to start with. And for a person who's looking for a switch, okay, I think it depends upon from which kind of role are you switching from to. Like for an SD1, if you are switching from SD1 to SD2, these problem might not be much enough, but still I think that it covers actually a lot of base, because when you move from SD1 to SD2, basically the shift of interview move towards the system design. Okay, there basically they still ask you good enough DSA questions, but still the weightage goes to system design more. And when if you are SD2 to SD3, then I think even this should be fine, because then majorly it's basically on LD, HLD, and system design. So yep, I think for a fresher you will need more than this. For SD1, a bit more, and SD2, I think that this should be enough. But yeah, for anyone who's starting with DSA, I think this list would be a good place to start with. Okay, so okay, it's already 8:54. Okay, let's wait for some more time and then we'll start for the speed run. Mhm. Okay, I've put in a final message. We're going to start with that. Okay. Okay, never mind. Let's start with the lead code 75. So let's first go to the first problem. Okay, I hope it's properly visible. Okay, this should be enough. So basically, the first is very simple problem. You are to given two strings, word one, word two. You have to merge the strings by adding the letters in the alternating order, one by one, one by one. Okay. And if a string is longer than the other, then basically you have to append the additional letters that are left to the end of the merge string. तो बेसिकली वन बाय वन इधर से उधर स्ट्रिंग्स को ऐड करना है. जैसे यहाँ पर ए बी सी है, पी क्यू आर है, तो ए बी बी क्यू सी आर ऐसे बन जाएगा ये. ठीक है. So this I think is pretty straightforward. What we can do is basically first directly was size m equal to 2 dot size
and then we can basically create variables and a final string. Let's say let's name that answer. Okay, while I less than m and less than m. Okay, what do we do? Answer plus equal to word one, word one of I, and answer plus equal to word two of j. Great. And then we can do I plus plus, j plus plus, whatever ends. So for the characters which might be left out क्योंकि एक स्ट्रिंग दूसरे शायद बड़ी हो सकती है, for that purpose हम ये लूप दोबारा लिखेंगे आंसर प्लस इक्वल टू वर्ड वन ऑफ आई. मैकेनिकल कीबोर्ड का यही प्रॉब्लम है. आई प्लस प्लस एंड देन लेट्स से while j less than m we can do answer plus equal to word 2 of j and first j plus plus. Okay, and then I think we can just directly return the answer. Should be enough. Okay, accepted from here. Let's run. ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, so I think directly start हो गया. So yeah, first problem is covered. Let's go to the second problem. Okay, यहाँ पर वी आर गिवन टू स्ट्रिंग्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ स्ट्रिंग्स. सो बेसिकली जीसीडी जैसा ही प्रॉब्लम है. यहाँ पर नंबर्स की जगह पर स्ट्रिंग्स गिवन एंड बेसिकली यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स str1 एंड str2 एंड यू हैव टू बेसिकली रिटर्न द जीसीडी ऑफ देम. तो जीसीडी बेसिकली स्ट्रिंग्स के फॉर्मेट में जीसीडी. So when we talk about numbers, तो simple सा बात है. GCD is basically the highest number that divides both numbers, right? We have A and B, so highest number that divides both and B, both A and B is GC, is their GCD. सो इन सिमिलर वे str1 और str2 जो होगा उसमें जो भी लार्जेस्ट स्ट्रिंग है जो कि दोनों को डिवाइड करता है. सो व्हेन वी से डिवाइड इट बेसिकली मींस कि कंप्लीट पैटर्न मैचिंग होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि str1 कुछ उसमें ए बी सी डी ऐसे कुछ गिवन है और हम कोई स्ट्रिंग निकालते हैं एक्स उसमें ए बी सी डी गिवन है. सो बेसिकली उसके जो विंडोज हैं लेट्स से कि तुम्हारे पैटर्न जो है तुम्हारा जी सी डी भी निकलेगा स्ट्रिंग का उसका साइज के है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो सिंपल सी बात है, जो साइज ऑफ स्ट्रिंग है दैट शुड बी डिविजिबल बाय के. ठीक है, तभी कंप्लीटली डिविजिबल है. और उसके बाद ईच विंडो ऑफ के यानी कि एक स्लाइड एक नॉट जस्ट स्लाइडिंग विंडो बेसिकली कंप्लीट विंडोज लाइक के लाइक जीरो से लेके के माइनस वन तक, फिर के से लेके यू नो के प्लस वन आई कैन से नॉट के से लेके टू के तक टू के माइनस वन तक. सो बेसिकली दीज आर द विंडोज राइट. ये डिस्टिंक्ट अलग अलग विंडोज है, नॉन ओवरलैपिंग विंडोज. ये सब कंप्लीटली मैच करनी चाहिए पैटर्न को. ओके, सो द फर्स्ट थिंग विच आई जनरली सी इज बेसिकली कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट सिंपल है, इंग्लिश के अपर केस लेटर्स हैं. ओके, सो पहली चीज़ क्या है कि हाउ डू वी गेट द जी सी डी. सिंपल सी बात है, वी नीड टू फिगर आउट द लार्जेस्ट स्ट्रिंग दैट डिवाइड्स बोथ ऑफ देम. ओके, अब सिंपल सी बात है, एक अगर लॉजिक लोगे नंबर्स को छोड़ते अगर स्ट्रिंग्स के फॉर्मेट में बात करोगे तो हमें बेसिकली डायरेक्ट पैटर्न मैचिंग का क्वेश्चन दिया गया है. ओके, इट्स डायरेक्ट पैटर्न मैचिंग प्रॉब्लम कि हमें कोई एक ऐसा पैटर्न निकालना है जो कि जिसको अगर हम बार बार रिपीट करें तो str1 और str2 बन जाए. राइट, अब हमें क्योंकि जीसीडी ढूंढना है, हमें क्योंकि लार्जेस्ट ऐसा पॉसिबल ढूंढना है, द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या साइज होना चाहिए. हमारा जो जीसीडी जो पैटर्न आएगा उसका साइज क्या होना चाहिए. सिंपल सी बात है, जो एन और एम है str1 और str2 उनका जो साइज है उसका अगर आप जीसीडी ले लोगे तो आपको अपने पैटर्न का क्या कहते हैं लेंथ पता लग जाएगा. राइट, तो व्हाट विल डू इज we'll first find the str1 dot size comma m equal to str2 2 dot size. Okay, and let's take as len, and len will be basically equal to gcd of n comma m. अब जो भी है जो देख रहा है whosoever is seeing the live stream, so basically gcd इनबिल्ट फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में. यू कैन ऑल्सो राइट इट योर ऑन योर ओन. कोई इतना बहुत अफलातूनी चीज़ नहीं है. इट्स वेरी सिंपल बेसिक मैथ्स. ठीक है, ढूंढने के बहुत तरीके हैं. आप चाहे मॉडुलस का तरीका निकालो चाहे माइनस का तरीका निकाल लो. इफ द नंबर्स आर स्मॉल यू कैन डायरेक्टली यूज माइनस, द वे ऑफ माइनस.
कि basically you keep on subtracting until finally we reach 0 or 1. Okay, the other way is basically using the modulus way, which is way faster in comparison to subtraction. ओके, बट स्मॉलर स्ट्रिंग्स के लिए जब तुम्हारे पास एन और एम छोटे हैं तो उसके लिए माइनस और मॉडुलस में इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ विल पास. बट फॉर द बिगर नंबर्स यूज मॉडुलस में. ओके, तो हमें यहाँ पर लेंथ पता लग गया अपने पैटर्न का. ओके, सो नाउ लेट्स डेवलप द पैटर्न. सिंपल सी बात है, जो भी हमारा पैटर्न होने वाला है इट इज़ बेसिकली गोइंग टू रिपीट एवरी टाइम, राइट. लेट से तुम्हारा एन है. ओके, और लेन हमारा है बेसिकली द लेंथ ऑफ द पैटर्न. तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एन विल बी डिविजिबल बाय लेन, क्योंकि हम डायरेक्टली जीसीडी लिया तो होगा ही. ठीक है. नाउ अगर मैं कोई भी बेसिकली एक विंडो ले लूँ. ओके, एंड विंडो शुड बी बेसिकली नॉन ओवरलैपिंग. तो हम जनरली जीरो इंडेक्स से शुरू करेंगे, राइट. सो इफ आई टेक द फर्स्ट लेन कैरेक्टर्स ऑफ आइदर str1 और str2, ओके, दे शुड मैच. दे शुड मैच. ओके, उनको मैच करना ही होगा विद द पैटर्न. ओके, दैट्स वाई हम अपना पैटर्न डिवाइस करने के लिए कुछ नहीं करेंगे. ठीक है, कोई भी एक स्ट्रिंग पकड़ लो, str1 पकड़ लो चाहे str2 पकड़ लो, एंड जस्ट मेक द पैटर्न while I len, let's say. Okay, then pattern would be basically plus equal to str1 of I. Okay, and I plus plus. Great. Yeah, hi, good evening, bhai. Good evening. Great. Some people have joined. Okay. Good evening. Good evening. Saksham, how are you? So we are currently solving the Leetcode 75 challenge, which is basically a 1 to 3 month preparation material. When you are preparing for placements or a switch. Okay, and we are currently at the second problem of this list. And yeah, कोई डाउट कोई क्वेश्चंस हो अगर तो चैट सेक्शन में पूछ सकते हो. ओके, टिल देन विल कंटिन्यू द प्रॉब्लम. सो बेसिकली हमें अपना पैटर्न मिल चुका है यहाँ पर. ओके, नाउ आफ्टर दिस हमें बस चेक करना है कि वो पैटर्न एग्जैक्टली मैच करता है कि नहीं. तो हमने लेंथ तो पैटर्न की निकाली ली थी. नाउ वी जस्ट हैव टू फाइंड कि वो पैटर्न जो है वो str1 जो स्ट्रिंग 1 है और स्ट्रिंग 2 को मैच करता है कि नहीं करता है. अगर दोनों को कर जाता है तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है, बिकॉज हमने लेंथ को तो ऑलरेडी मैक्सिमाइज कर लिया है, राइट. क्योंकि हमने लेंथ को डायरेक्टली जीसीडी की वैल्यू के बराबर लिया है, सो वी ऑलरेडी हैव द लार्जेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग. अब हमें बस चेक करना है कि वो जो पैटर्न है वो मैच करता है कि नहीं करता है. अगर करता है तो वेरी गुड, नहीं करता तो इट्स बेसिकली अ नल स्ट्रिंग. ठीक है, इन केस अगर नहीं करता है तो वी विल रिटर्न नल स्ट्रिंग. ग्रेट. ओके, सो पैटर्न मिल गया. अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर. व्हाट वी विल डू, जस्ट आई विल क्रिएट अ फंक्शन, pass str1, pass the pattern. Okay, pass the pattern. Okay, and check str2 comma pattern. Okay, so basically both of them are completely satisfying the pattern. So basically हम क्या return कर देंगे, this is basically a ternary operator कि अगर ये condition true हुई, ओके, इफ बोथ दीज रिटर्न ट्रू, देन ये पहली कंडीशन चलेगी तो हम रिटर्न करेंगे पैटर्न, नहीं तो एक नल स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे. ठीक है, अब और लिखते हैं अपने चेक फंक्शन को. सो इट्स अ बूलियन टाइप फंक्शन. इसमें हम पास करेंगे एक स्ट्रिंग, इसको हम एड्रेस लिख सकते हैं, और एक स्ट्रिंग रिटर्न, एक स्ट्रिंग होगा पैटर्न का. ठीक है, उसको हम स्ट्रिंग एंड पैट लिख देते हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का साइज निकाल लेते हैं. ठीक है, डॉट साइज एम इक्वल टू पैट डॉट साइज. ग्रेट. उसके बाद हम दो लूपिंग वेरिएबल्स ले लेते हैं, जे इक्वल टू 0. बस ओके, एंड दैट वुड बी इनफ. अब हमें बस कुछ नहीं करना है, बस आइटरेट करना है आई लेस देन एन, क्योंकि बेसिकली हमें क्या चेक करना है कि जो पैटर्न वाला जो पैट है स्ट्रिंग, दैट इज कम्प्लीटली रिपीटेड इन एस. ठीक है, तो यहाँ पर हमें लगातार चेक करना है हर विंडो पे कि भाई वो लगातार मैच कर रहा है कम्प्लीटली और नॉट. सो ये आई के लिए लूप चलाएंगे. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट चेकिंग द एग्जैक्ट पैटर्न. सो वाई आई लेस देन एन एंड जे लेस देन एम, क्योंकि एम हमारा पैटर्न तो छोटी स्ट्रिंग होगी, राइट, छोटा लेंथ होगा. सो एट एनी पॉइंट अगर एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू पैट ऑफ जे, इसका मतलब क्या है कि ये पैटर्न ब्रेक हो रहा है, एंड दिस मीन्स दैट
we will never be able to find any जीसीडी ऑफ दीज टू स्ट्रिंग्स, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर है जो शायद एक में एग्जिस्ट करता है और एक में नहीं करता है. इट इज़ वेरी सिमिलर टू, अगर तुम दो को प्राइम नंबर्स ले लो, या फिर कोई एक नंबर ले लो, या को प्राइम नंबर्स वुड बी द बेस्ट थिंग, कि कोई भी दो सेट ऑफ नंबर्स जिनके आपस में कोई भी फैक्टर सेम नहीं है. ओके, सो दैट इज बेसिकली द सेम थिंग. मान लो इसमें सी है, उसमें डी है, और क्या कहते हैं, तो बेसिकली द प्रॉब्लम है. ठीक है, क्योंकि वो मैच ही नहीं करेगा. Okay, so in this case we can just directly return false or I plus plus j plus plus. अब every time we are done with this हमारा पैटर्न फिर से स्टार्ट होगा, तो j को हम फिर से जीरो से बराबर कर देंगे, राइट, बिकॉज हमें फिर से वो पैटर्न मैचिंग करानी है. एंड आफ्टर दिस लूप इज ओवर, अगर कभी भी ये फॉल्स रिटर्न नहीं करता, दिस मीन्स कि ये पैटर्न कंप्लीटली मैच कर गया, तो विल रिटर्न ट्रू. ओके, सो ये हो गया. नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस. It gets accepted here. Now let's submit. Okay, the second problem also is done. Let's go to the third problem. Okay, great. उसके पहले बस एक बार let me just check. People joining. Are people joining or not? Okay. Is there a way I can see how many people have joined the live? Okay, I can see two likes and one person. Okay, got it. So yeah, if you have any doubts, any other questions which are not related to this, then too you can ask them. No issues. Okay, great. Let's proceed further for the third problem. So there are n kids with candies. You are given integer array candies where each candy's I represents the number of candies the ith kid has, and an integer extra candies denoting the number of extra candies that you have. Return a Boolean array result of length n, where result of I is true if after giving ith kid all the extra candies, they will have the greatest number of candies among all the kids, or false otherwise. तो यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात है. वॉट यू हैव टू डू इज कि हर जो एक्स्ट्रा कैंडीज आपके पास हैं, इफ यू गिव इट यू नो टू सम चाइल्ड, सम आयत चाइल्ड, so after giving that extra candies, will they have the greatest number of candies? If yes, then good. If no, तो उसके लिए false होगा. So basically for each child we have to calculate this. तो सिंपल सी बात है. हमें पता है कि हमारा मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, राइट. हमारा मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, हम वी कैन एक्चुअली सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इंट्यूटिवली. ठीक है, ऐसे समझो क्लास में जैसे 2 3 5 1 3 है. ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 5 है, राइट है, 5 है. अगर अब मैं क्या कहते हैं, अगर मैक्सिमम वाले बच्चों को 3 कैंडी दूंगा, तो सिंपल सी बात है, उसका ग्रेटेस्ट ऑलरेडी रहने वाला है. हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर ब्लॉकेज कहाँ पर आता है. ठीक है, अब जैसे हम 2 को लेते हैं. ठीक है, अगर हम 2 को लें तो बेसिकली 2 + 3 क्या है, 5 है, जो कि मैक्सिमम तक पहुंच रहा है. वेरी गुड. 3 लेते हो, 3 + 3 6 होता है. तो यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना, यू जस्ट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन द एरे, और फिर एट ईच पॉइंट यू जस्ट चेक कि इफ द कैंडीज ऑफ आई प्लस द एक्स्ट्रा कैंडीज, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स, देन बेसिकली उसका उस बच्चे के लिए आंसर ट्रू हो जाएगा, एल्स फॉल्स हो जाएगा. सिंपल सी बात है, इसमें टाइम ही नहीं लगाना है. लेट्स क्रिएट अ बूलियन एरे. इट्स फर्स्ट then equal to candies dot size. Yeah. Okay. Now let's read bool, and let's say answer variable size is n. Initially we'll say all false. Okay. Now I can do two things. Basically, the first thing is I can directly find the maximum using a built-in function, or I can just find the maximum directly. So let me do the trivial way. Okay, x equal to 0 for auto x candies, mx will be equal to max of mx comma x. Okay, after this, for int I equal to 0, I open n I plus if candies of I plus extra candies is greater than equal to mx. This means कि हाँ भाई ये possible है.
इसको हम कर देंगे ट्रू एंड जस्ट दिस वी कैन रिटर्न द आंसर। हाँ, आंसर वेक्टर, बस इतना ही करना है। सिंपल बेसिक मैथ है और कुछ नहीं है। एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पर चला के देखते हैं। ओके, ग्रेट। Okay. All those who are joining, you can come in the chat section. You can introduce yourself to me. It'll be my first time when I'm directly interacting with you. ओके, सो डायरेक्टली अपना इंट्रो दे दो कि भाई कौन हो, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो इस समय। और ठीक है, और ये चैनल कब से फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें कोई डाउट है जो तुम्हें पूछना है, कोई टॉपिक तुम्हें समझना है या फिर कुछ और चीज़ हो, या फिर यही स्ट्रीम देखनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइव देखनी है, तो जस्ट कमेंट एंड ड्रॉप अ लाइक। ओके, ग्रेट, ये हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैन प्लेस फ्लावर्स। ओके, यहाँ पर क्या है, you have a long flower bed in which some of the plots are planted and some are not. However, flowers cannot be planted in adjacent plots. Okay, given an integer array flower bed containing zeros and ones, where zero means empty, one means not empty, return integer and integer n. Return true if n new flowers can be planted in the flower bed without violating the no adjacent flowers. So basically, तुम जो क्या कहते हैं, फ्लावर बेड जो तुम्हें हमें यहाँ पर बोला गया, इट्स बेसिकली एन एरे ऑफ 1 0। 0 मीन्स खाली है, 1 मीन्स वहाँ पर प्लांट लगा हुआ है। द रूल इज बेसिकली कि हर एक प्लांट जो है वो एटलीस्ट एक मतलब एडजेसेंट प्लॉट्स में नहीं हो सकता। सो इट कैन नेवर बी लाइक वन वन टुगेदर, वन आफ्टर अनदर, राइट। तो इट शुड ऑलवेज बी सेपरेट बाय अ जीरो, राइट। तो सिंपल फॉर एग्जांपल अगर पहला ले लें तो उसमें 1 0 0 और 1 है और n है 1। अब मुझे सिर्फ एक पौधा प्लेस करना है, सो आई कैन डायरेक्टली प्लेस इट इन मिड, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो अल्टरनेटिंग नहीं लगे हैं, एक के बाद एक नहीं लगे हैं, एक का गैप है, राइट। सो दैट इज फॉलोड। ठीक है, सेकंड केस में वही चीज़ नहीं हो पाएगी, राइट। क्योंकि हमें एटलीस्ट यहाँ पर दो ये चीज़ खाली चाहिए। सो नाउ व्हाट डू वी डू फॉर दिस, व्हाट डू वी डू फॉर दिस। सो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं जीरो के जो स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, अगर ये तो मान लो एक छोटा स्ट्रिप दिया है, इसमें एक ही जीरो का स्ट्रिप है, मान लो एक बड़ा एरे हो जहाँ पर 1 फिर 0 0 फिर 1 फिर 0 0 0 ऐसे करके हो, तो जीरोस की मल्टीपल स्ट्रिप होगी। हम अपने प्लांट्स को इन जीरोस की स्ट्रिप में प्लेस कर सकते हैं। नाउ फॉर एनी स्ट्रिप दैट वी हैव, हमारे दो खाली स्पॉट्स तो बेकार जाएंगे। क्यों? ऐसे समझो, अगर यहाँ पर 1 है, ठीक है, फिर यहाँ पर 0 0 0 0 0 ऐसे करके है, और ये 1 है, तो मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दिस वन और यहाँ पर पॉइंट्स प्लांट्स को ऑलरेडी कभी प्लेस ही नहीं कर सकता, राइट। क्योंकि भाई वो रूल वायलेशन होगा। सो मेरे पास इफेक्टिवली सिर्फ ये तीन ही बचे हैं, ये तीन ही बचे हैं, और इनमें मैं प्लेस कर सकता हूँ, राइट। सो नाउ हाउ व्हाट वी विल डू इज, कोई भी स्ट्रिप जीरो की निकालो, उसकी लेंथ तो हमें पता लग गई, ठीक है। उसमें से दो जो होंगे एंड पॉइंट्स वो तो ऑलरेडी बेकार जाने हैं, तो इफेक्टिव लेंथ जो तुम्हारे पास बचती है प्लॉटिंग करने के लिए, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज बेसिकली लेंथ -2। ओरिजिनल स्ट्रिप, अगर ओरिजिनल जीरो स्ट्रिप की लेंथ अगर मान लो एल है, तो L-2 प्लॉट्स तुम्हारे पास बचते हैं लगाने के लिए प्लांट्स, और उसमें से भी सिर्फ आधों पे लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अगेन उनके बीच जो नए प्लांट्स लगाओगे उनके बीच में भी तो जीरो वायलेशन वाला पॉलिसी लगना चाहिए। दैट्स वाई व्हाट वी विल डू, हियर वी कैन प्लेस टू फ्लावर्स एक्चुअली, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। सो क्या करोगे, दिस यू कैन सी 3/2, 3/2 इज 1.5, तो हमें इससे पता लगता है कि वी हैव टू टेक द सील वैल्यू। ओके, वी हैव टू टेक द सील वैल्यू, सील डिवीजन। ओके, सो यही हमें करना है। अगर इन सब का सम, अगर जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो हम प्लेस कर सकते हैं, अगर दैट टोटल प्लांट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, इसका मतलब हम एन पौधे तो पक्का प्लेस कर सकते हैं एंड विल रिटर्न ट्रू। ओके, now let's put it in the structure. Okay, so what we'll do, let's take out a count variable cnt equal to 0. Now we can just directly start on flower bed. Okay, so if x is 0, if x is 0, okay, so we do what, cnt plus plus. Okay, let me do one thing. Instead of this, let's create two things, total and CNT. Total be basically telling us the total number of plants. Else, at any point when we start from 1, right? When we start from 1.
ओके। सो यहाँ पर वन आएगा, तो जब भी हमें एक नया वन एनकाउंटर होता है तो ये स्ट्रिप की लेंथ हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। सो एट दैट पॉइंट व्हाट विल डू, हम क्या करते हैं कि ओके, व्हाट अबाउट द केसेस जहाँ जहाँ पर एंड पे कोई भी प्लांट नहीं है, व्हाट अबाउट दोज केसेस जब एंड में कोई भी प्लांट्स नहीं है, राइट? लाइक जैसे वन वन ट्रिपल ज़ीरो हो, इस केस में यहाँ पर रख सकते हो, नहीं, यहाँ पर ही रख सकते हो। इट्स अगेन 3 - 2 effectively only. Let's take this 5, हाँ यहाँ अगेन इट्स बेसिकली द सेम थिंग, 100, यहाँ पर क्या है, इट विल बी ओके। यहाँ पर प्रॉब्लम है, अगर 100 मैं बोलूँ तो वहाँ पर एक पौधा लास्ट में रखा जा सकता है, राइट? व्हाट इफ इट्स ऑल जीरोस? अगर ऑल जीरोस हैं सो दैट विल बी अ डिफरेंट केस। ओके, ठीक है, चल नॉट अ प्रॉब्लम। बड़े केसेस को लिख लेते हैं। 0 0 0, यहाँ पर प्लेस किया, यहाँ पर प्लेस किया, इसके 4 - 2 प्लस 0, दैट स्टिल मीन्स ओके। अगर मैं 2 ले लूँ तो 2 - 2/2 प्लस 1 एक्स्ट्रा पॉइंट, सो आई थिंक दिस विल डू। ओके, दिस लॉजिक शुड डू। सी एन टी प्लस प्लस किया। ओके, एट एनी मोमेंट व्हाट डू वी डू, यू नो, total will be plus equal to CNT। So now सिंपल सी बात है, शायद ये जस्ट कि ये ज़ीरो ना हो जाए, तो CNT - 2/2 +1, दिस इज द नंबर ऑफ प्लांट्स जो हम उस स्ट्रिप में प्लेस कर सकते हैं। ओके, एंड फिर हम क्या करेंगे, CNT को ज़ीरो कर देंगे, ठीक है, अगेन। एंड जस्ट फॉर फाइनल इन्फॉर्मेशन कि बाय चांस अगर एंडिंग में कोई CNT रह जाए जिसको हमने ना कवर किया हो, सो उसके लिए सो रिटर्न टोटल ग्रेटर दैन इक्वल टू n। अगर ये ट्रू होगा तो आई थिंक वी शुड बी गुड इनफ टू गो। ओके, लेट्स ट्राई दिस। ओके, दिस gets accepted on the basic test cases. Let's try to submit for all. Okay, there's the wrong answer. Why? Let's see. Okay, we have n equal to 2. Okay, and 4 minus 2. Okay, 4 minus 2 is 2. And 2/2, 1 plus 1 2, and n equal to 2। ओके, जबकि यहाँ पर हम सिर्फ एक्चुअली में सिर्फ एक ही प्लेस कर सकते हैं। ओके, हाँ, but in that case things are different। अच्छा, ओके, दिस इज फॉर इन बिटवीन। जब हम लास्ट में करते हैं तब ये CNT - 1/2 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे कितना है, 4 है ना। 4 - 1 करो ना, यहाँ पर दो प्लेस कर सकते हैं, राइट? आप जो एंड पॉइंट्स होते हैं उन पे तो हमें कोई चेक पॉइंट की दिक्कत है ही नहीं। हाँ, राइट, उन पर तो दिक्कत है ही नहीं। अगर मान लो टोटल मान लो 5 हो ऐसे जीरोस, इधर इधर इधर, तो वी कैन डू 5/2 का C, राइट? हाँ, पर बंद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आई थिंक सो।
ट्रू दे रहा है, ट्रू दे रहा है, ट्रू। ओके। फोल्स कैसे आ गया? तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक स्टार्टिंग स्ट्रिप और एंडिंग स्ट्रिप को अलग से हैंडल कर दें, राइट? स्टार्टिंग स्ट्रिप और एंडिंग स्ट्रिप को अलग से हैंडल कर लें, क्योंकि उनका लॉजिक अलग रहता है। ओके। हाय। हाय एवरीवन। हाय। हाय। Sahana. Is that right? Hi, Sahana. What's up? How are you? Yeah. Where are you from? And are you a student or a professional? It's my first time interacting with all of you. Do you have any questions? आप एक बार अपने बारे में बताओ कि आप कौन हो and where you from. It's my first time basically doing a live stream. So, yep. Okay, okay, great. Two people have joined. Okay, so uh, you can introduce yourself. जो भी नया बंदा आ रहा है, I'll be happy to know everyone. Hmm. Okay. Okay. ठीक है. I think let me say. Okay. So I am originally from Uttar Pradesh. I'm currently in Bangalore. I'm working as a software engineer in a startup. What about you? So आप basically Sahana.
are you like doing engineering, or are you a student or a professional, और अब अभी क्या कर रहे हो आप? स्कूल में हो, कॉलेज में हो, इंडस्ट्री में हो, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो? हम्म। ओके। एक्चुअली मैम मेरे पास अभी इसका एक अलग भी आइडिया है. इंस्टेड ऑफ डूइंग द मैथ, लेट्स डू वट एवर इज आस्क्ड फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ. ओके. हम बस डायरेक्टली प्लेस करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं, प्लांट्स को. ओके, सो लेट्स स्क्रैप दिस आउट कम्प्लीटली. इसको हटा ही देते हैं. ठीक है. हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं डायरेक्टली बस प्लांट्स को प्लेस करने की. प्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. जितने प्लांट्स प्लेस करते जाएंगे उनका डिक्रीमेंट करते जाएंगे, राइट? So what do I do? I first of all, let's take the size of this array. Dot size. Do you watch anime? Uh, I mean, ऐसे तो मैं आई एम नॉट बिग फैन. आई एम बिग फैन व्हाट आई से कि मैं बहुत तो नहीं देखता. बहुत नहीं देखता, बट या आई हैव वॉच्ड सम शोज लाइक डेथ नोट एंड नारुतो. उसके कुछ एपिसोड्स देखे, बट नॉट कंप्लीट. आई एम नॉट अ बिग फॉलोअर कि मैं प्रॉपर ऐसे रेगुलर बेसिस पे देखता हूँ. ओके, लेट्स प्रोसीड. सो एट एनी पॉइंट, इफ वी गेट एन एम्प्टी स्पॉट जहाँ पर हम अपने पॉट को रख सकते हैं, लेट्स प्लेस इट देयर. लेट्स ट्राई टू प्लेस इट देयर. फ्लावर बेड ऑफ आई. ओके. इन दैट केस हमें क्या चेक करना है, उसके आजू बाजू चेक करना है, उसका नेक्स्ट और उसका प्रीवियस. वहां पर अगर जीरो है हम सिर्फ तभी प्लेस कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट डू वी चेक? इफ आई माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, लेट्स डिफाइन अ चेक वेरिएबल. रूल सी equal to, let's say initially we'll take it true. If I minus 1 is greater than equal to 0, then we check if if flower bed of I, if flower bed of I minus 1, in case अगर ऑलरेडी भरा हुआ तो भाई नहीं कर सकते. Languages do I speak? uh, I speak English, I speak Hindi. Mainly I speak only two languages. और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की समझ में, आई कैन अंडरस्टैंड, लाइक पंजाबी, बिट ऑफ मराठी, बिट ऑफ उड़िया, a bit of Bengali too. ये बहुत थोड़ी थोड़ी आई कैन अंडरस्टैंड. आई कैन मेक सेंस आउट ऑफ सेंटेंसेस, बट आई डू नॉट प्रॉपरली स्पीक. प्रॉपरली आई ओनली स्पीक टू लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी. C will be false in this case. Same case, we check I plus 1 less than m. Check if flower bed of I plus 1, then 2, it's a problem. C will be equal to false. Okay. After this, okay, now we just basically check if C, then basically we can place plant at that point equal to 1 and n minus 1 is. Finally, we can just return n greater than equal to 0. Okay, so क्या हो गया? मैम 2 1 है ना? bit of I. Oh, sorry, n less than equal to 0. Okay, you speak Tamil. Okay, so are you native from Tamil Nadu? This question is over. So where do you basically actually belong to? Like from Tamil Nadu, or are you from a family that migrated to? You're from Canada. Oh, nice, nice, nice. So what are you doing there? I mean, masters, bachelors, which field specifically? And I think apart from Tamil, you must also be speaking English, right, on a daily basis. Do you draw?
No, I don't have as much like any liking to, you know, drawing. But I appreciate arts. But yeah, I don't have particular interest in drawing. Tell me about yourself. I mean, so what you're actually doing in Canada? Thank you. Thanks. Uh, yeah. So what do you actually do in Canada? Are you a master student or like a bachelor student? So what are you studying actually, or are you in currently school itself? Do you have interest in programming? Okay. Nevertheless, okay, let's we continue on the stream. Okay, so you are given a string, reverse only all the vowels in the string and return it. The vowels are A, I, I, O, U, and they appear in both lower and upper cases. Okay, great. So we basically have to reverse the order of vowels in the given string, and the letters in the string can be both of uppercase and lowercase, and the size of the string is pretty much not very big, but yeah, I mean it's on the upper constraint, but yeah, उसका need नहीं है, we don't need that. Okay, so like we have ice cream, and if I revert it, we have I E, then we have E A. So the order reverses, right? So what we can do, very simply, is basically uh, either we can create a set to check, or we can do it, like writing manual conditions. So what I will do, I will first create a simple set because I don't want to waste time on writing big conditions. So I'll just create a character set st, and in this set I will put in a e I o u, and same goes for the uppercase ones because हमारे पास uppercase भी है. We also have uppercase letters. I What happened? Yeah, it's my first time streaming. So, if you check out my channel, are you first time to the channel? So I've been basically creating this programming content for last 1 year, and I think around more than 100 videos I have on my channel, consisting of short length content as well as full 40 to 50 minutes long videos covering different concepts and lead code contests and other things as well. So I've never actually live streamed. This is my first live stream ever in my life. I thought, to interact with people on daily basis because when you're trying to reach out to people who actually need the help, and I can understand that there are thousands of other channels. So I thought the best way to interact and engage everyone's attention towards the content and towards problem solving is basically do a live stream where you directly interact with them. So yeah, this is my first time streaming. Mm. Okay. So yeah, you didn't tell about yourself. So what do you do in Canada? And what's your actual name? Is it Sahana, or I'm not very well aware because it's a huge handle name of YouTube. So I don't know. Is it Sahana or something else? Am I correct in pronouncing your name? Till then, let's just Dr. Care XAT, and then what do we do for auto X S if st dot find x not equal to st dot end. This means it's a vowel. We can just directly push it into t dot push back x.
After we are done with this, we have to just reverse the order. Reverse t dot begin, comma t dot end. Okay, great. After this, we just have to place the values back again. So let's take the size of the string for like 0, I like an n, I plus t come from. Okay, st dot find s of I not equal to st dot end. This means it's a vowel, and we have reversed the order. So okay, I think we might not even need to reverse the order actually. We can just say s of I equal to t dot back, because you have to reverse just the order, right? And t dot pop back. And then I think, is it a void type? Okay, I can just directly return the answer, return s itself. Great. This passes the test cases. Let's go to the next problem. Reverse words in the string. So I think this is, you know, very same like the similar, the last problem. Not very different. The characters have to be in the same order. Only, they will come in a different order. So what we can do here is basically just simple create a answer string. Okay, and let's take a temporary string. Okay. So great. Reverse order. Okay, let's go in the reverse order. So also let's define the size of the string. Hi, both people who have joined. You can introduce yourself. How can I see who has joined? Oh, okay, great. Okay, let's just come back again. Okay, so we'll start in the reverse order, as we know that we have to reverse the string, but we have to reverse the words instead of the complete string. Okay, so let's start from minus 1, I get equal to 0, I minus minus. Okay, and if at any point s of I is equal to, you know, a blank space, so this means that we have reached the end of a word. So in that case, we'll just directly pick up that string, and first we have to reverse the order. Let's take reverse temp dot begin, comma temp dot end. So this reverse of reverse. So basically we are already going in the reverse direction. So our string and letters will be in the reverse order. But we need the words should be in this reverse order. But जैसे कि वो लिखे हैं, they should be like same. Like यहाँ पर अगर blue है तो blue यहाँ पर आ गया है. The order of the words is reversed, but the individual words are not reversed. So यहाँ पर reverse of reverse again basically brings them back to the original situation, right? Original state condition. ये किया और उसके बाद temp को हम खाली बना देंगे. Okay, else we can keep on, and let's just also add uh, empty character कि वो चाहिए ही चाहिए. Else we can do just temp plus equal to what, s of I. एंड एट द एंड, क्योंकि शायद एक लास्ट वर्ड रह जाएगा, तो उसके लिए बस इतना करना है, इसको कॉपी करके उठा लो, इसको यहाँ पर डाल दो.
and I can directly return the answer. Hi everyone. Okay, so I can see four people. Okay, two people left. Okay, so anyone who's new to the channel, you can introduce yourself. We are meeting for the first time, live to live, face to face. कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो आपका, तो आप पूछ सकते हैं. Okay, what happened? Okay, एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? If s of I is this, तो इनिशियली आया होगा ऐसे. बट 10 को एम्प्टी तो कर दिया था यार. आंसर इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग था. ओके, आंसर में रिवर्स किया. सेव दिस. ओके, से टेम्पो 5 आता है. उसको तो ऐड ही नहीं करते हैं. खुद ही ऐड कर दिया ना. ओके, इसका अच्छा यहाँ पर अच्छा ओरिजिनली भी स्ट्रिंग्स प्रेजेंट है. ट्रेलिंग रेलिंग वाली. अरे ओके, दिस. ओके. हम्म. हम्म. सो यहाँ पर ना वाइल डाल देते हैं यार. लेट्स पुट इन वाइल लूप. आई थिंक दैट शुड बी गुड इनफ. यहाँ से उठाते हैं इसे. आई माइनस माइनस कर देते हैं और एल्स तो हटा ही देते हैं. यहाँ पर क्या करते हैं, एक बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं एफ इक्वल टू फॉल्स. यहाँ पर एफ को ट्रू कर देंगे. एक्सक्यूज मी अ मिनट. Oh, sorry, sorry. I actually had forgot myself. So yeah, this is my sorry. Yeah. So this is my first time live stream ever. So are you a subscriber?
Hello. Yeah. Okay. Oh, great, 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 great. So in that case, you must have been following the content. So this is my first live stream ever. So what I've thought is basically to engage more people and to draw audience. It's best to actually interact with them directly. So I thought that this is the best way to do so. And yep, this is our first live stream. We are solving the LeetCode 75 challenge. It's basically a 1 to 3 month preparation list of problems given by LeetCode itself. And yeah, we have just started off, and I think we have just solved around what the first 5 problems we have done, and we are currently on the sixth problem. If you have any doubts, any questions, you can directly just ask me in the chat section itself. Back is exactly equivalent to an empty string. Then answer dot pop back. Now let's uh, reverse the string again to remove the trailing spaces from the front. Okay. So see, when you are basically giving interviews and OAs, so there is a lot of difference in how you code during OAs and interviews. So when you are in an interview, you are basically judged on various other parameters like how are you naming your variables and functions, and is your code readable, is the structure proper, and uh, is your code good enough, is it working, is it optimal. Optimal is basically a technical part, but yeah, still you are judged on parameters like naming, code quality, readability, robustness, etc. But when you are in OA, when you're giving an online assessment, it generally does not matter how you are writing the code. अगर आपने वेरिएबल नेमिंग बहुत अच्छी नहीं करी है, ए बी सी एक्स वाई जी कुछ भी किया है, बट योर सोल्यूशन इज वर्किंग, दैट इज इनफ, दैट शुड बी मोर देन इनफ. ठीक है. OAs के टाइम पे you don't have much time, and also the level of problems during OA is way too hard, is way too much in comparison to in interviews, right? So उस टाइम पे आप जैसे भी लिख पाओ, आपको बस सोल्यूशन चलना चाहिए. इट्स नॉट कि आप कैसे लिख रहे हो, बट व्हेन इंटरव्यूज you should be very specific about how you are naming your variables and how you are writing your code. Okay, now let's copy the same line again. This should, and this one again. Okay, I think this should be answer, not 10. Same goes here. This should remove the trailing spaces. This is the most local way. I could have used an inbuilt function for this, but yeah, I thought that it's better to directly. What happened here? Okay, I also need to remove by at least one space. Okay, by at least one space. So let's do one thing here. Let's directly put in a loop here. Okay, while s of I s of I is exactly equal to this. Okay, and I less than n. Let's do I plus plus now. Oh, I minus minus. Sorry. फालतू में इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है. What happened here? हेलो वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम हो गया. Plus equal to 10. Yes. Okay, there's an overflow. Okay, I can see 5 people have joined. Oh, great. Can see only 3 of them. Okay, yeah. Nonetheless, let's see again what's the issue. Uh, okay. How about we do one thing? Uh, you know, Instead of going this way, let's just pick up the words first and then we'll reverse the order directly. I think that will be a better way to go.
Okay, let's not reverse in this way at all. सिर्फ फालतू की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है. ठीक है. What do we do? N equal to s dot size. Okay, and let's take up a vector of words. Okay, and what we will do for I 0 I less than n I plus plus. Okay, now what do we do? If s of I is an empty character, we'll just ignore it. We'll just simply ignore it. Okay, and here we'll just create a temporary string where we will basically be building each word. So if s of I is exactly equal to this, okay, yep, we'll check if t is not empty. If t is not equal to an empty string, this means कि हमारे पास कुछ है, right? In that case, हम words में just push back कर देंगे t को, t, and यहाँ पर t को कर देंगे एक empty string के बराबर. Else we'll just keep on adding words into it, s of I. Okay, for final part I think uh, okay, अगर extra string भी होगी, okay, yeah. Just for the final part कि in case if t is not equal to an empty string, कि हमारा जो final word बना होगा, we can just directly push the last word into it, push back t. Okay, and then now we just have to bring them all together. So we have our words ready. We just have to reverse this words array, words dot begin, comma words dot end, and now we can form our final answer string. This for auto x words answer plus equal to x and answer plus equal to an empty character. Now since we will be adding an extra empty character, so we will pop back, and finally we can return our answer. I think this should be enough. Yeah, this is enough. Let's submit this. Okay, yeah, this one passes. So simple, yeah. I think, I mean, there is another way. The other way is basically you first, reverse the complete string, and then you basically keep on reversing individual words within. That is also a way. But I think, there is no actually no need. Nobody's going to ask you this level of question in interview, right? It's actually a very easy question, to be honest. Okay. Now here comes the first problem that I think that can be asked in an interview. Not in a way, but in interview you can expect this kind of problem. Okay, this is a very famous and fine problem of array. So you are given an integer array nums, return an array answer such that answer of I is the equal to product of all the elements except nums of I. So basically आपके पास अगर एक array है उसमें मान लो 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, मतलब मैं यहाँ पर एलिमेंट्स के इंडेक्सेस की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4. सो अगर मैं कहता हूँ कि मुझे आंसर ऑफ 2 चाहिए, तो आंसर ऑफ 2 का मतलब है 1 3 और 4 जो एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, सो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट इटसेल्फ. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 है. ठीक है, तो 1 को अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, 24 आता है. अगर मैं 2 को इग्नोर कर दूँ तो 3 4 12 आता है. सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड दिस. ओके, अब एक बार कंस्ट्रेंट पढ़ते हैं. ऐसे प्रॉब्लम्स में कंस्ट्रेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ओके, द फर्स्ट थिंग इज बेसिकली 2 से लेके 10 की पावर 5 है, -30 से लेके 30 तक नम्स की वैल्यू है. ओके, द इनपुट इज जनरेटेड such that the answer of I is guaranteed to fit within a 32-bit integer. Okay, can you solve the problem in order of an extra space? So हम डायरेक्टली एक्चुअली ऑर्डर वन से ही करेंगे. ठीक है, हम कोई फालतू में अलग से वो नहीं निकालेंगे. लॉजिक बहुत सिंपल है. आप ये समझो, फॉर एग्जाम्पल लेट से मुझे इस एरे के कंप्लीट एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है. मुझे इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है. तो इफ आई हैव टू फाइंड फॉर एनी आई द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ, तो मुझे क्या करना होगा? तो टोटल प्रोडक्ट मुझे पास ऑलरेडी है, मुझे बस डिवाइड करना है उसको करंट नम्स ऑफ आई से. तो मेरे को क्या पता लग जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट इटसेल्फ.
राइट? एंड दैट इज द सिंपल लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, एंड इट इज गारंटीड कि 32 बिट इंटीजर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर दो चीज़ें करेंगे। सबसे पहले तो हमें निकालना है कि सारे नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है, बट बट उसके पहले हम एक बहुत ही दिमाग वाली चीज़ करते हैं। अब सिंपल सी बात है, तुम ये समझो, अ, अगर हमारे पास कभी भी हमारे एरे में एक जीरो से ज़्यादा जीरोज हैं, मान लो दो या दो से ज़्यादा जीरोज हैं, तो प्रोडक्ट जो है वो हमेशा जीरो आएगा। किसी भी नंबर को एक्सेप्ट कर लो, अगर तुम, अगर मान लो यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर दो जीरो होते, तो अगर मैं चाहे एक जीरो को हटा भी दूं अपने इवैल्यूएशन, तो तब भी एक जीरो प्रोडक्ट में रह जाएगा। ओके, सो द फाइनल प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी जीरो इररिस्पेक्टिव। अगर एक ही जीरो है, तो दैट इज अ स्पेसिफिक केस जहां पर जो एक जीरो होगा उसको छोड़ के बाकी सारे नंबर्स का प्रोडक्ट। और बाय चांस अगर कोई भी जीरो नहीं है, ओके, बाय चांस अगर कोई भी जीरो नहीं है, तो भाई बढ़िया बात है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट लेट्स टेक काउंट। सबसे पहले तो एक अपना एक आंसर वेरिएबल आंसर एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, विच वी हैव टू रिटर्न। ओके, वेक्टर इन आंसर ऑफ साइज n। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनिशियली int c इक्वल टू 0। दिस इज बेसिकली फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ zeros, लेट्स नेम इट एज z। ओके, फॉर ऑटो x nums इफ नॉट x, यानी कि अगर बेसिकली वो जीरो है, तो हम जेड जीरो का काउंट बढ़ा देंगे। अब हमारे पास तीन केस आते हैं। इनिशियली लेट्स से डिक्लेयर ऑल ऑफ देम एज जीरो ओनली, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। So now what do you do if z is exactly equal to 0? If z is greater than equal to 2, okay, then you can just directly return the answer here itself, क्योंकि सारे प्रोडक्ट जीरो ही आने, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, else if z is equal to 1, ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है कि जहां पर एक जीरो को छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, राइट? सो हम एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, लेट्स डिक्लेयर इट हेयर, और हम इसको बाय डिफॉल्ट वन मानेंगे। प्रोडक्ट तुम जीरो से नहीं, सम वेरिएबल जीरो से शुरू होता है, प्रोडक्ट वेरिएबल वन से शुरू होते हैं, राइट? सो यहाँ पर ही एल्स कर लेते हैं, एल्स prod इनटू इक्वल टू एक्स, जो कि हमको चाहिए, राइट? इससे हमें सारे नंबर्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा विच आर नॉन जीरो। ठीक है, अगर दो से ज़्यादा जीरोज हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो भाई सारे जीरो होने हैं। अगर जेड वन है, तो जस्ट डायरेक्टली गो टू द पॉइंट जहाँ पर आपको जीरो मिला था। ओके, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इफ इनिशियल एरे का नाम नम्स था ना, या इफ नम्स ऑफ आई, इफ नॉट नम्स ऑफ आई, या फिर नम्स ऑफ आई इक्वल टू जीरो। ओके, इन सच केस हम क्या करेंगे, बस सिंपल आंसर ऑफ आई को क्या बना देंगे, प्रॉड के इक्वल, एंड दैट शुड बी इनफ। यहाँ पर रिटर्न आप आंसर कर सकते हो। बट इन केस अगर कोई भी जीरो नहीं है, इन केस अगर कोई भी जीरो नहीं है, तो क्या करना है, तो सेम यही लूप उठा लो, सेम यही लूप उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, और उठा के यहाँ पर चिपका दो, बस ये हटा दो। ठीक है, ये हटा दो, क्योंकि भाई अब हमारे पास कोई भी जीरो नहीं, तो इसका मतलब है कि हमें प्रॉपर डिवीजन करना है। तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय नम्स ऑफ आई, बस, और यहाँ पर रिटर्न आंसर। एक बार चला के देखते हैं। सो इट गेट्स एक्सेप्टेड ऑन सैम्पल टेस्ट केसेस। सब पे चलाते हैं। ओके, सो इट पासेस ऑल द टेस्ट केसेस, ग्रेट। सो अनदर प्रॉब्लम सॉल्व्ड। हम आई थिंक वील जस्ट कंप्लीट द नेक्स्ट टू प्रॉब्लम्स, और उसके बाद वील एंड द लाइव स्ट्रीम। आई थिंक इट्स ऑलरेडी मच टाइम। ओके, great. Let's go to the next problem. So, how many of you are still there in the live stream? Can you just, give a thumbs up? Just give a thumbs up. That should be enough. Because I'm actually not aware where to see who all people are online. Okay, now nobody shows. Okay. So what we have to do, given integer array nums, return true if there exists a triplet of indexes I, j, k, such that I is less than j less than k and nums of I is less than nums of j.
बेसिकली इंक्रीजिंग ट्रिपलेट चाहिए हमको। ठीक है, इफ नो सच इंडेक्सेस एग्जिस्ट, रिटर्न फॉल्स। तो हमको ये तो बोला नहीं गया है कि दिस आई जे के हैज टू बी कॉन्जिक्यूटिव। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड एनी आई जे के सच दैट नम्स ऑफ आई इज लेस देन नम्स ऑफ जे एंड नम्स ऑफ जे इज लेस देन नम्स ऑफ के। सो बेसिकली ट्रिपलेट बनना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इनके इंडेक्सेस भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हैं। सो लेट्स टेक लाइक 1 2 3 4 5, हम पास 1 2 3 4 5 है। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 1 3 4 कुछ भी ले लो, बहुत सारे ट्रिपलेट बन रहे हैं, राइट, बहुत सारे ट्रिपलेट बन रहे हैं। ओके, वी हैव टू जस्ट चेक कि ऐसा ट्रिपलेट बन सकता है कि नहीं। ओके, नाउ हाउ डू वी डू दिस, हाउ डू वी डू दिस। सपोज हम कोई भी नंबर से स्टार्ट करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 गिवन है। सपोज वी आर गिवन 1 2 3 4 5। इनको सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने से कोई फायदा है? सॉर्ट करने से, ओके, ओके, अगर मैं सॉर्ट कर लूँ और इनको इंडेक्सेस के साथ में डाल दूँ, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं जैसे 215046 ले लूँ, तो इफ आई अरेंज दिस सो दिस विल बी 0 1 2 4 5 एंड 6, और इनके रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस क्या है? जीरो का इंडेक्स है 3, वन का इंडेक्स है 1, टू का इंडेक्स है 0, फोर का इंडेक्स है 4, फाइव का इंडेक्स है 2, सिक्स का इंडेक्स है 5। ओके, अब ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है, मुझे इसमें देखना है कि इंक्रीजिंग ट्रिपेट मुझे मिल जाए, राइट। तो 8 पीपल ज्वाइन, यार एक तो एक समझ नहीं आता है कि 8 पीपल ज्वाइन है कि 3 पीपल ज्वाइन है। ओके, yeah, if you are having fun, just drop a like and subscribe to the channel. We'll be having more such live streams where I'll just come online, meet with, interact with you, take up your doubts, discuss any new techniques that you might have known. हम just it's an open platform. आपको अगर कुछ और भी पूछना, you can ask, and anybody who is joining, you can just shout. You can just give a shout out, or you can just write in the comment section itself. Okay, and we'll take it up and we'll talk together. ओके, ओके, सो ये तो समझ में आ गया। सो इनको क्या करते हैं, इनको इंडेक्सेस के हिसाब से सॉर्ट कर लेते हैं, और फिर देख लेते हैं कि उस इंडेक्सेस में अगर कोई हमें इंक्रीजिंग ट्रिपलेट मिल जाए तो बेटर है, राइट। हम्म, या फिर एक और अच्छा तरीका मेरे पास है, आई हैव, उससे एक्चुअली दो टॉपिक कवर हो जाएंगे, एंड दैट इज एक्चुअली लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, बट आई डोंट एक्चुअली वांट टू ओवर कॉम्प्लिकेट द प्रॉब्लम। उसकी ज़रूरत यहाँ पर एक्चुअली है नहीं। But maybe we can 4 5 6 इंडेक्सेस अगर अरेंज हो तो इंडेक्स पे ट्रिपलेट ढूंढूं मैं। ठीक है। क्या कोई सिंपल तरीका है? लेट मी चेक द वैल्यूज। वैल्यूज कैन बी वेरिएबल इन ऑर्डर वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, ऑर्डर वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। व्हाट कैन बी द ऑर्डर वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी?
Space complexity. Okay. JK W. मेरे डिफरेंट रिटर्न तो बनना नहीं है, ये ओनली टेल के एग्जिस्ट करता है कि नहीं. Okay, okay. No such index exists. Return false. Okay. Uh-huh. Okay. Hmm. Let's try to look at our approach, like difference of values approach. Like we have what 215046. I start with two. Okay, start with two. So minus one. Going down. Okay. Uh-huh. Hmm. Hmm. Okay. एक्चुअली में इसमें इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत है नहीं. Yeah, we can at any point we can actually maintain two minimums and find the next maximum, right? Ah, right. We can do this. Okay. So what my idea is basically at any point we'll just maintain two values. Okay. क्या होगा, एक फर्स्ट मिनिमम एक सेकंड मिनिमम. ओके, फर्स्ट मिनिमम सेकंड मिनिमम. अब जैसे कोई एक थर्ड वैल्यू आती है जो कि दोनों से बड़ी होती है तो एक ट्रिपलेट बन जाएगा. आई टेल यू हाउ बेसिकली टू इम्प्लीमेंट इट. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट size. Okay, and initially we'll take both of them as what, int max. Let's just take them as int max is equal to int max as well. I think that should be fine. Okay. Great. Okay. Now let's just traverse over this I less than n, I plus plus. Now first what do we check? If nums of I is less than equal to f. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सो बेसिकली समझो, एस हमारा सबसे छोटा होगा, एफ उससे बड़ा होगा, और उसके बाद उससे बड़ा एक एलिमेंट अगर मिल गया तो हमारा ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट? दैट शुड बी आवर अप्रोच. तो हम वही करने वाले हैं. पहले हम एफ से चेक करेंगे क्या ये जो एलिमेंट है वो एफ से बड़ा एफ से छोटा है या क्या है. ठीक है. तो वील जस्ट असाइन व्हाट, एफ इक्वल टू नम्स ऑफ आई. ठीक है. यहाँ पर एस लीड करेगा, राइट? यहाँ पर एस लीड करेगा. अब क्या है, एफ पहला वाला है, उसके बाद सेकंड आता है, फिर अपना लास्ट वाला बिगर एलिमेंट आता है, तो ये ट्रिपलेट बनता है. ठीक है. तो पहले हम चेक कर रहे हैं क्या करंट एलिमेंट
जो हमारा एफ आई आया है वो कि एफ से भी छोटा है। अगर वो एफ से छोटा है तो एफ को अपडेट करेंगे, राइट। एल्स एल्स सिर्फ हम चेक करेंगे किसको, एस के साथ में, इज लेस देन इक्वल टू एस। ओके, एस विल बी इक्वल टू नम्स ऑफ आई। एल्स अगर ये दोनों से बड़ा है, अगर ये बाई चांस दोनों से बड़ा है, और सिंपल सी बात है, हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या इनिशियली स्टार्ट कर रखी है, इंट मैक्स, तो भाई उतनी तो बड़ी वैल्यू कोई होनी नहीं है। अगर मान लो जो हमारा करंट नंबर है वो एफ से भी बड़ा है, एस से भी बड़ा है, तो हमारे पास ट्रिपलेट क्या बनेगा, जो ट्रिपलेट बन के आएगा दैट विल बी ऑफ काइंड एफ कॉमा एस कॉमा व्हाट, नम्स ऑफ। ठीक है, ये बनेगा। और यही तो हमें प्रेजेंट, यही तो पता करना है कि भाई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। रिटर्न ट्रू डाल देंगे, ठीक है। और बाहर आके इन केस अगर हमें कोई भी ऐसा ट्रिपलेट नहीं मिल पाए तो रिटर्न फॉल्स। या दिस पासेस द सैंपल टेस्ट केसेस। सब पे चला के देखते हैं इसे। या ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, राइट। सो हाँ, बहुत सिंपल लॉजिक था इसका भाई, दो वेरिएबल्स मेंटेन करके चलो, ठीक है, एफ और एस, ठीक है। तो व्हाट वी बेसिकली डू इज कि भाई लगातार अपडेट करते जाएंगे एफ और एस को, ठीक है। अगर करंट नम्स ऑफ आई जो है वो एफ से छोटा है, अगर वो एफ से छोटा है, ठीक है, तो एफ को अपडेट करो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वो एस से भी छोटा होगा तो वो तो बात की बात है। अब मान लो बाय चांस कोई एलिमेंट ऐसा आता है जो कि एफ से बड़ा है, अगर एफ से बड़ा है तो इसका मतलब है वो सेकंड सीक्वेंस का पार्ट बन सकता है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे एस के साथ, अगर वो एलिमेंट एस से छोटा है तो इसका मतलब है नया सेकंड एलिमेंट वो होगा। और मान लो वो एफ और एस दोनों से बड़ा है, तब क्या है, ये हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा ना, एफ कॉमा एस कॉमा नम्स ऑफ आएगा, तो इसका मतलब है ट्रिपलेट एग्जिस्ट करेगा। इन केस अगर ये कंडीशन कभी फुलफिल नहीं होती है तो भाई ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। नाउ वी विल कवर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, ठीक है। एरे के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं आज, ओके। स्ट्रिंग कंप्रेस क्या कहता है, गिवन array of characters chars, compress it using the following algorithm. Begin with an empty string s for each group of consecutive repeating characters in chars. If the group length is 1, append the character to s, otherwise append the character followed by the group's length. Okay, the compressed string s should not be returned separately but instead be stored in the input character chars. Okay, ऐसा क्या, नोट दैट ग्रुप लेंथ्स दैट आर 10 और लॉन्गर विल बी स्प्रेड इनटू मल्टीपल, हाँ ठीक है। आफ्टर यू आर डन मॉडिफाइंग द इनपुट एरे, हमको रिटर्न करना है उसका न्यू लेंथ। हमें एक्चुअली में दो चीज़ें करनी है, ठीक है। रिटर्न हमें सिर्फ लेंथ कराना है, पर जो हमारा कैरेक्टर एरे कैर्स दिया हुआ है हमें उसे भी अपडेट कराना है, उसे भी अपडेट करना है। यहाँ पर देखना है पास बाय रेफरेंस है, जब पास बाय रेफरेंस होता है तो इफ एनी चेंज वी मेक इन द दैट वेरिएबल, वेदर इट एन एरे वेक्टर स्ट्रिंग कुछ भी हो या कुछ और वेरिएबल हो, तो उसमें जो चेंज किया जाता है पास बाय रेफरेंस पे वो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस दो चीज़ें होती है। पास बाय वैल्यू क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ द वेरिएबल ऑफ दैट एरे एंड अदर थिंग्स, while pass by reference basically directly gives you the address, it passes the address कि इस एड्रेस पे ये वैल्यू प्रेजेंट है। तो अगर आप कोई चेंज एड्रेस पे करते हो तो वो चेंज रिफ्लेक्ट होता है हमेशा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लाइक वी हैव ए बी बी ट्रिपल सी, सो अगर हम इसको कंप्रेस करें तो दिस शुड बिकम A2B2C3, ये बनेगा। अब इसका साइज कितना है, इसका साइज हो जाएगा 6, टोटल 6 साइज है इसका। और जो हमारा नया कैर एरे होगा दैट शुड लुक लाइक दिस, A2B2C3, ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे भाई, बहुत सिंपल चीज़ है। एक बात बोल रखी है कि अगर वन लेंथ है, अगर लेंथ वन है, तो उस केस में जो कॉन्जिक्यूटिव ग्रुप का साइज है वो अपेंड नहीं किया जाता है, ओनली फॉर कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही चीज़ निकाल लेते हैं यार, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। और मेन बात है क्योंकि हमें एक फाइनल उसको अपडेट भी करना है, सो यप, वेक्टर एक कैरेक्टर का ले लेते हैं जिसे हम अपडेट कराएंगे बाद में। लेट्स कॉल इट एज टी ओनली, ठीक है। मैं इसको अभी कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, इसको बस सिंपली टी बोलूँगा मैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू इज, लेट्स क्रिएट अनदर थिंग एज व्हाट, इसका पहले साइज निकाल लेते हैं कैर्स का जो एरे है, ठीक है। एक हमारा आंसर वेरिएबल भी बना लेते हैं जो कि हम रिटर्न करेंगे टोटल लेंथ, ठीक है। अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। व्हाट विल डू, we'll do for int I equal to 0, I less than n, I plus plus,
राइट। नाउ जब तक एक कैरेक्टर सेम रहता है तब तक हम उसके कॉन्जिक्यूटिव स्टेप को उठाएंगे, उसकी लेंथ निकालेंगे। सो व्हाट डू वी डू, int c इक्वल टू 0, जो कि उस कॉन्जिक्यूटिव स्टेप का लेंथ बताएगी मुझे। सो while I इज लेस देन n एंड s ऑफ I इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर वो कैरेक्टर भी ले लेते हैं, कैरेक्टर लेट से p, और वो s ऑफ वो कैर्स ऑफ I के बराबर है, कैर्स ऑफ I के बराबर होगा। ओके, if chars of I is exactly equal to p, then we keep on adding this c plus plus, और यहाँ पर I plus plus तो हो ही रहा है, राइट। आफ्टर दैट हम क्या चेक करेंगे, आफ्टर दैट व्हाट डू वी डू, अगर मान लो जो तुम्हारा लेंथ आया है, जो उसका क्या कहते हैं बेसिकली तुम्हारे काउंट का, वो अगर वन है तो भाई हमें सिर्फ कैरेक्टर अपेंड करना है, अगर काउंट भी आया है तो भाई वो नंबर भी अपेंड करना है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज बेसिकली इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं काउंट को। इफ काउंट इज ग्रेटर देन वन, सिर्फ तभी करना है, अगर नहीं है तो भाई नहीं करना, ठीक है। एल्स हम क्या करेंगे, टी डॉट पुश बैक, ठीक है। टी डॉट पुश बैक तो वैसे भी दोनों के केस पे करना ही है, तो टी डॉट पुश बैक तुम्हारा अपना कैरेक्टर पी, ठीक है। अब उसके पहले देख लेते हैं, अगर काउंट ग्रेटर देन वन है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें वो वैल्यू भी अंदर पुश करनी है। तो अब हमें उसके डिजिट्स निकाल लेने हैं, सिंपल सी बात है। या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि उसका स्ट्रिंग क्रिएट कर लो और एक के बाद एक कैरेक्टर्स पुट इन कर दो। तो मैं वही करूँगा, मैं डिजिट्स नहीं निकालूंगा फालतू में। तो स्ट्रिंग लेट से व्हाट, स्ट्रिंग सी एन टी, इट्स नेम है सी एन टी, एंड इन बिल्ड फंक्शन टू स्ट्रिंग, जो कि इसके काउंट को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। आफ्टर दैट आई विल जस्ट यू नो hover over this complete uh, काउंट स्ट्रिंग, और एक एक करके टी डॉट पुश बैक करता जाऊंगा उसके कैरेक्टर्स एक्स, और एवरी टाइम आई डू आंसर प्लस प्लस हियर, ठीक है। यहाँ पर आंसर प्लस प्लस करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम एज एक कैरेक्टर जो बढ़ा रहे हैं, एक कैरेक्टर जो काउंट का पुट कर रहे हैं वो यहाँ पर होगा, ठीक है। एंड जब भी हम ये पुश बैक करेंगे तब ये भी करेंगे आंसर प्लस प्लस, ठीक है। आफ्टर व्हेन वी आर डन, आई थिंक व्हेन वी आर डन विद दिस, हमारे पास एक पूरा कंप्लीट जो वो होगा, आंसर तो ऑलरेडी रेडी है। अब हमें जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसको मॉडिफाई करना है। तो उसको मॉडिफाई करने के लिए क्या करोगे, कैट्स डॉट रीसाइज, कैट्स डॉट रीसाइज आंसर, ठीक है, एंड कैट्स को इक्वल कर दो, ठीक है। बस इतना करना है। हमने क्या किया, जो नया हमारे पास आंसर आया वो हमें बताता है कि जो कंप्रेस्ड स्ट्रिंग है उसका साइज क्या है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, उससे रिसाइज कर देंगे अपने कैरेक्टर्स एरे को, और उसके बाद इक्वल टू कर देंगे टी, जो हमारा नया कंप्रेस्ड एक्चुअली कैरेक्टर एरे है, क्योंकि दे हैव सेड कि यू डू नॉट नीड टू रिटर्न अ कंप्लीट स्ट्रिंग सेपरेटली, बट जो इनपुट कैरेक्टर है उसी को अपडेट कर देना है, राइट। ये कर दिया, एंड आफ्टर दिस जस्ट रिटर्न योर आंसर। व्हाट हैपेंड, अच्छा उल्टा करना है, ओ ठीक है। तो पहले पहले कैरेक्टर पुश करा देंगे यार, इसमें क्या है यार, दिक्कत वाली बात थोड़ी। अब क्या दिक्कत हुआ, ए टू, ओके, बी कैट्स ऑफ आई इज एग्जैक्टली इक्वल टू पी, ओके। ए का टू आया, बी का टू क्यों नहीं आया भाई, और सी का थ्री क्यों नहीं आया। कैट्स ऑफ आई, वो तो अपडेट हो रहा है ना यार लगातार। लेट्स प्रिंट आउट द सी वैल्यू हियर, पहले तो सी चेक कर लेते हैं एक बार कि सही है कि गलत आ रही है यहाँ पर। इसको टू टू थ्री दिखाना चाहिए, टू वन टू आ रहा है, वो टू वन टू कैसे आ रहा है भाई। ओह ओके, इस वजह से वो एक्स्ट्रा अपडेट चला जा रहा है। नाउ आई गेट इट।
वो क्या हो रहा है ना कि आई प्लस प्लस जब यहाँ पर हम कर ही रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर जब चेकिंग स्टेटमेंट पे एक और आई प्लस प्लस हो जा रहा है, एंड दैट्स वाई बेसिकली वो दो बी की जगह एक भी काउंट कर रहा है, सो दैट इज आई रिमूव इट फ्रॉम द फॉर लूप. Okay. Now if we run it, it basically works. बहुत simple logic. We get the length of the consecutive strips. Characters कौन सा है? We push that. We increment our total length of the new compressed string. उसके बाद we check that if the count is one. तभी हमें count की value push करनी है अपने string में. So what do we do? Instead of extracting digits, I went a simpler way. I converted the count to a string itself, and then I basically extracted single character and updated my length. After all this is over, I just resize my original chars array with the new length, and make chars equal to t. Now let's just submit this question. Great. It passes all the test cases. So yeah, with this we have actually covered all the, like, how many problems were there? Four, four, eight, nine. So totally we have covered nine problems in this live stream. I think this was all for today. Not many joined today. I guess by tomorrow and in the upcoming streams, the participation would be more. I think because it was my first time stream, so nobody actually expected it out of nowhere. Yeah, but yeah, we'll be doing more such streams in the upcoming days. Hope so. And we'll try to finish off the lead code 75. So just because I'm actually explaining you the logic as well when I'm coding, that's why it actually takes a bit more time. If I just directly code it up, it will be very fast. I'll cover it up very fast, but it will be of no use to you because you won't be able to understand ki hua kya bhai hai. Okay, so with this we'll end the today's live stream. Yeah, and we'll cover the other topics in the upcoming days. And yeah, that's all for today. Thanks, guys. Go and subscribe the channel and follow our Insta page. It's Code Time Insta page, where regularly keep on uploading you know puzzles. And yeah, I can actually create a new intro song as well that is also present. You can check them out all in the in the channel link. So if you go to open the channel page, you will find all the links to the Insta page, to the WhatsApp community, to the Telegram community. And subscribe, share it with your friends, and let's increase participation more and more, guys. Okay. uh Bye, guys. That's all for today.